ओके, तो आज हम लोग एक बहुत फेमस क्वेश्चन देखेंगे और काइंड ऑफ शुरुआती क्वेश्चन है जब हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम शुरू करते हैं लीड कोड में। नाम है टू सम। गिवन एन array of integers num and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target। तो बेसिकली कह रहे हैं कि कोई टारगेट होगा लेट्स से एनी नंबर 9, राइट, और जो नम दे रखा होगा मतलब जो लिस्ट दे रखा होगा लेट्स से 2, 7 एंड 8। so we can see that जो इंडेक्स 0 पे है विच इज 2 एंड इंडेक्स 7 पे है, सॉरी इंडेक्स 2 पे है विच इज 7, कैन गिव अस द टारगेट 9। तो बस हमें वही इंडेक्सेस बताने हैं, राइट, दैट्स ऑल वी आर सपोज टू डू। तो फर्स्ट व्हाट वी कैन डू इज हम लोग एक फॉर लूप लगा लेते हैं। रेंज लेंथ नम्स वाई, जो हमारा लिस्ट है उसकी लेंथ जितनी है मतलब उसमें जितने एलिमेंट है हमें उतनी बार आइटरेट करके चेक करना है, राइट। यस, नाउ वी वांट टू चेक सेकंड लूप। हम एक और हमें लूप लगाना है और उसमें दूसरा नंबर चेक करना है और साथ साथ हमें ऐड अप करके देखेंगे कि जो हमारा टारगेट है वो आ रहा है या नहीं। और जे इन रेंज और फ्रॉम 1 to what number, can you take a second and tell me what number should be there? So yes, from 1 to, yes, from I plus 1 to len num. If if nums I plus nums j equal to what target, then return, what are we supposed to do? We just have to return the index img, else they are sent. You may assume that exactly there are one solution and you can find. So we can just simply return an empty, an empty, yes, an empty list. That's all. That's all. We got our answer. Um, let's try to run it. So right now all the cases are accepted. Now try to submit it. Yes. Uh, fine. Now it is showing beats 12%. I can show you one trick. If you resubmit it, let's see what happens. Now it increased 17%. Fine. So this is a quite decent solution that we can give to some problem. Fine. So we will end up here.